Hello everyone. Good evening. Audio video clear achi? Okay. So hello everyone. I'm Sudipta Simran Ponda welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. Tell me how are you everyone? केमिति सब अच्छा? All okay? मते कहि दियो स्टार्टिंग रु एवरीथिंग इज क्लियर ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि तो हमें क्लास स्टार्ट करबा डायरेक्टली ओके तो जेमिति कि आपण माने समस्त जानि चंती महापैक रो प्राइस रहउची 4000 जदि आपण माने 4000 दे कि बैच परचेज करूचंती 2 इयर्स रा वैलिडिटी पाई परिबे जोथे ऑल वन एग्जामिनेशन कवर अप हो जाउची एल्स आपण माने जदि एठी मो कोड SPG10 यूज करूचंती आपण माने एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पे एठी पाई परिबे राइट जदि आपण माने सिविल सर्विस पाई भी प्रिपरेशन करूछंती देन आपण माने अधिकारी प्री बैच अधिकारी प्री प्लस मेंस हैला अधिकारी मेंस हैला ऑप्शनल बैच different batches माने को enroll करि परिबे these are the durations of the batches and here is the price list you can check here 82805 32825 this is the helpline number so आपण माने याको भी कांटेक्ट करि परिबे 9124730510 it's my whatsapp number आपण माने मते भी डायरेक्ट कांटेक्ट करि परिबे जदि आपण माने टीचिंग एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करूछंती SSP TGT no matter for the arts PCM or CPZ all batches are available here in the only channel that is Vedang teaching एबे आपनकर चेंज हे जाईची टीचर्स पॉइंट Vedang okay so these are the different price list and duration आपण माने टी कॉल करि परिबे तो डायरेक्ट जीबा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन all are ready श्याम सुंदर जेना महापैक रा प्राइस होची 4000 जदि आपण माने मो कोड अवेल करूचंती SPG10 ताहाले सेठी आपण माने गुटे 10% डिस्काउंट मिल जाउची कि ऑलमोस्ट 3600 आसीजो ओके चलो तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पई मते को इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा वाज द माहलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अच्छा मु आपण मानक फर्स्ट थिंग कहि दोची जो माहलवारी सिस्टम अछि व्हाट इज द सिस्टम एक्चुअली ना एथिरे आपनकर टोटल गोटे विलेज को कोन गोटे विलेज को या फिर गोटे स्टेट को गोटे महल बोली अकाउंट करा जिवो एंड एथिरु रेवेन्यू कलेक्ट करा जिवो देन एको कोन कह जाउची ना माहलवारी सिस्टम आपनकर कह जाउची राइट तो जेते बेले आपनकर यार ओरिजिन आबे देखिबा कहा द्वारा हेतिला आगर राइट आंसर आपण माने समस्त दे देउचंती कि संबलपुर जदि हम यार ओरिजिन देखुचे जानि चंदी को जागारु संबलपुर ओरिजिन हेची केबे हेतिला एटा बे आपण मानकु पचारिबो को ईयर रे आपनकर ये हेतिला लाइक आई एम मेकिंग इट क्लियर हियर कि कॉन्सेप्चुअली आपण माने माइंड रे रखंतु कि इट वाज बाय होल्ट कोन थिला तांका ना होल्ट मैकिन्से केबे हेतिला ना 1822 रे हेतिला एंड लैटर एटा आपनकर कोन हेतिला ना रिफाइंड हेतिला लैटर इट वाज रिफाइंड ओके बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक केबे हेतिला
ना एटा आपनकर रिफाइंड हेसी 1833 गोटे 22 गोटे 33 एतिकी जिंस को आपण मानकू मन रखिबार अछि एतिकी जिंस आपण मानकर मन रहिबो तो जदि आपण पचारिबो फास्ट आपनकर कहा सहित रिलेट हेसी मैकेंजे सहित ताको रिफाइंड हेसी नेक्स्ट स्टेप रे केबे ना आपनकर बेंटिक 1833 सहित मन रखि पारिबो तो इंप्लीमेंट हेतिला आपनकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रे जदि हमें ओडिसा देखुचे जदि आपण माने इंडिया रे देखुचे ताले आपनकर नॉर्थ ता सहित आपनकर सेंट्रल तो एई प्रोविंस रे आपनकर कोन एटा इंप्लीमेंट हेतिला एतिकी जिंस रिलेट करि परिबो ड्यू टू द टैक्स कलेक्शन पई एंड हियर आपनकर गवर्नमेंट ओरिजिनली डिमांड करितिला 60% ऑफ द रेंटल वैल्यू जोटा कि गोटे एक्सट्रीम जिंस हो जाउतला जदि आपन पचरा गला कि ए रोतवारी सिस्टम रे गवर्नमेंट केते डिमांड करितिला ना 60% ऑफ लैंड वैल्यू आपनकर कोन टैक्सेशन रे डिमांड करितिला बट इनिशियल 1855 रे आपनकर जते बेले ताकू डिमांड को के फुलफिल करि पारले नाही तो 60% आपनकर रिड्यूस हे कि अगेन 50% हे जाइतिला एटा हला बेले को 1855 हे जाइतिला 1855 बेले को रिड्यूस हे कि 60% 50% आपनकर हे जाइतिला क्लियर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यस जयराम सो राइट आंसर समस्त पाई गला कोन होची ना द मालवारी सिस्टम वाज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हेतिला 1822 रे एंड लेटर रिवाइज हेतिला 1833 रे कहा का द्वारा एठेले मैकेंजे को रिलेट करेबो एठेले बेंटिंग को रिलेट करेबो एतिकी जिंस आपण मानको मन रखिबार अछि नेक्स्ट चलो मते को इन द रियोतवारी सिस्टम फ्रॉम whom did the British collected land revenue ओडिसा एठी का कथा कहिछि आपण मानकर कोन ना मालवारी पळेला मालवारी माने आपण मानकू कहली बुझा पड़िला एतले रियोतवारी कहूछि ए रियोत वर्ड मींस आपनकर कोन रियोत वर्ड इटसेल्फ हमें जानि छे a system where the British government collected the land revenue directly कोठु ना from the individual cultivator तो रियोत मींस आपनकर कोन कहूछि कि एठी जो वर्ड रियोत अछि that means आपनकर peasants जहां को हमें कौन कहूछे ना फार्मर्स है ना एंड डायरेक्टली आपनकर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हे पारुछि एठू कलेक्टेड फ्रॉम द peasants देन ताको हमें कौन कहि परिबा लॉर्ड विलियम बेंटिक हां सब रिलेट करूछि व्यस्त होनी तो राइट आंसर आपण माने कौन मानले ना जमींदार्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिविजुअल्स कल्टीवेटर्स विलेज कौन हम राइट आंसर इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स एठी आपनकर राइट आंसर हे जिवो हर नै मते को इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स आपनकर राइट आंसर हे जिवो तो समस्त मो सहित एग्री ओके आसा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नाही जमींदार आपनकर भाया मीडिया हे कि जाउतला विलेज काउंसिल्स भी नाही नेक्स्ट क्वेश्चन मते डायरेक्टली रिलेट करेबो कहिछि which law introduced in 1825 allowed 43 British government to confiscate the land of any zamindar failing to pay land revenue by the end of the financial year in Odisha तो जते बेला आपन को कोनोसी फाइनेंशियल ईयर कथा कहूची दैट मींस आपन को कोन हेतिला ना एटा नथिंग बट द देखिबा केतना राइट आंसर दोचो वेरी गुड याको हमें कोन कहूची ना सनसेट लॉ बोली हमें जानि छे मालवारी एक्ट आपन मन को ऑलरेडी कहि देची एटा आपन करो दिस वाज गवर्नड इन द विलेज लेवल सेटलमेंट रे दैट वाज फोकसिंग ऑन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी rather than the individual आपनकर कोन जहा भी आपनकर फॉरफीचर रहिला बट स्टिल सनसेट लॉ आपनकर कोन थिला ना एटा रिक्वायर्ड होतले जमींदार्स मानकू एंड जमींदार्स माने आपनकर जहा भी टैक्स कलेक्ट करिवे तांकू पे करिवा को पडुथिला इन अ फिक्स्ड रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ दैट डे और द सनसेट पूर्वरु आपनकू कोन दाखल करिवा को पडुथिला ब्रिटिशर्स मानक आगे जदी आपन मान दाखल करि परिबे ताहाले आपनकर जमींदारी को ट्रांसफर करिके अलगा कोनसी पर्सन को से ट्रांसफर करि देबे एटा थिला आपनकर कोन सनसेट लॉ जदी रियोतवारी कहिली एबे जस्ट कहिली आपन मान को रियोतवारी कहिली आपन मान को एटी फोकस करूची इंडिविजुअल एंड आपनकर को सर्वे ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैला इंडिविजुअल कहिली रियोतवारी को बुझिबो लैंड कंसोलिडेशन एक्ट एमती आपनकर किछि एक्ट थिला कि दिस इज अ माने आपनकर कोन मॉडर्न एरा रे हमर एटा हेतिला पोस्ट इंडिपेंडेंस रे हम को रिलेट करै परिबा जोथरे लैंड एम करूथिले कोन ना मर्जिंग करिकि स्कैटर्ड करिकि जो मान को होल्ड करिकि ता बदल रे खजना देबा जाथला हैला नेक्स्ट चलो राइट आंसर कोन कहूछो मते को तो ओडिसा टेनेंसी एक्ट ऑफ 1913 जेते बेले ओडिसा टेनेंसी एक्ट कहिछि 1913 कथा राइट आंसर कोन मारुछ मते क्विकली कुआ
Orissa Tenancy Act of 1913 aimed to provide protection to whom against eviction by zamindars in Odisha. कौन हबो right answer? Quick. संध्या पूर्व सनसेट पूर्व आपनकर सूर्यास्त पूर्व कलेक्ट हो दैट वाज सनसेट ला जल्दी यार आंसर कोन दोछ जेते बेले ओडिसा टेनेंसी एक्ट आसीला आपण माने वेल्दी लैंड ओनर्स माने कोठु कलेक्ट केवे हेई परिबो कि एक्चुअली लैंड ओनर्स माने रेस्ट्रिक्टेड थिले बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर पावर्स ऑफ दिस लैंड ओनर्स आपनकर कोन नथिंग बट द जमींदार ए माने नथिले तो ऑब्वियसली आपनकर पीजेंट्स एंड टेनेंसी रहिबे को माने रहिबे ना ओनली पीजेंट्स एंड टेनेंट्स रहिबे जे कि प्रोवाइड करूतला द ऑक्युपेंसी राइट्स द लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलीगल एविक्शन to the actual tailors है ना the next question right answer आपण मानकर कोन ही गला एठी ना the Odisha Tenancy Act 1913 that was a landmark piece of legislature enacted to regulate the relationship between the landlords and their tenants okay next मते को the British landlords कोन कहि छी ना the British land revenue policies in Odisha had a significant impact on the agrarian economy and society of the region. Which of the following is not a negative impact of the British land revenue policies? कौन होगा right answer? Quick. What will be the right answer? पिला सब आज कोड़े जाई चंदी? क्लास बंद बोली भाभी चंदी ना कोना? आज कहार मैच चली जी? पिला सब कोड़े? Negative impacts of land revenue आपन को ए क्वेश्चन ने पचारी छी राइट तो नेगेटिव इंपैक्ट्स आपन को कोन आसी परियो मते कुओ कोन हबो ना फर्स्ट कहि छी कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ a few wealthy individuals that is a very negative impact exploitation of the all of the above अछि अच्छा कोन कहि छी exploitation of the कोन peasantry growth of rural poverty and independence then improvement in agriculture productivity what will be the right answer quick रुद्र राइट आंसर आपनकर कोन होजी क्विक देखो एवरीथिंग एक्चुअली आपनकर कोन नेगेटिव इंपैक्ट होची बट जेहेतु हमको गोटा को चूज करिवार अछि हमको डी चूज करिवा डी टा टिके बेसी आपनकर कोन एप्रोप्रिएट लागुची इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पछाची द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन ओडिशा हैड ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन agrarian economy and society of the region which of the following is not a negative impact of the British land revenue ei tinta jaka apanकर कोन नेगेटिव लागुची किंतु जदी इंप्रूवमेंट हेची एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रेट तो कोटे नेगेटिव पॉइंट नो एटा कोठी ना कोठी पॉजिटिव पॉइंट तो ताको हमको ए एंगल देखिबा को पड़िबो राइट चलो नेक्स्ट मते को which of the following was the main objective of the British land revenue policies in Odisha तो मेन ऑब्जेक्टिव आपनकर ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ओडिसा रे कोन रहुची मते के कहि परिबा क्विक टू इंक्रीज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम लैंड टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द peasantry or to promote the development of agriculture or all of the above कोन राइट आंसर मार्चो देखिबा कोन राइट आंसर मार्चो पछाची which of the following was the main objective of the British land revenue policies in Odisha to देखो जेते बेले कहै to increase the revenue generated from land to improve the lives of the peasantry ए जो देछि to improve the lives of the peasantry से माने केबे peasant मानक विषय रे भाबी चंती कि all मारिबा पूर्वरु थरे भाबी दियो all मारिबा पूर्वरु थरे एटलीस्ट निजो को पचार कि ब्रिटिशर्स माने आपन को peasant मानक पाई किछि करि चंती कि देन त माने all केमति मारचो राइट आंसर आपनकर ओनली ऑप्शन ए हबो कोन हबो ना ओनली ऑप्शन ए एमिति वाला क्वेश्चन त मानकु फसे दबो ना बस बस मु तो एमटी क्वेश्चन को वेट करी थाए नेक्स्ट देखो कोन आंसर दोजो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन ओडिशा अंडर द ब्रिटिश ओके फर्स्ट कहिछि द ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड सेटलमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओडिशा टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू द रियोतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सम पार्ट्स एडी पछेछि आपनकर कोन कहिलो कि which of the above statements are correct पछे तो फर्स्ट सेंटेंस आपनकर कोन अछि मते खाली कहि दियो ना द ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड सेटलमेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओडिशा टू असेस द कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू एटा आपनकर ठीक अछि पछे which are correct ये तो ठीक अछि देन नेक्स्ट पढि देबा द रियोतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा सच एज द बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट तो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट को हम रियोतवारी सिस्टम सहित काहे की कनेक्ट करू छ मते के कहि परिबो क्विक रियोतवारी सिस्टम को हमें बालेश्वर सहित कनेक्ट करू छ कि
एटा राइट हबो और रॉन्ग हबो मते कहि दियो रियोत्वारी सिस्टम आपणकर साउथ रे हेइथिला रियोत्वारी सिस्टम आपणकर साउथ रे हेइथिला नॉट की कोस्टल डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर रे ताको हमें कोन ना मैम बालेश्वर रे जमींदारी हां तो ताको हमें साउथ सहित कनेक्ट करिबा द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन ओडिशा हैड ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एग्रीरियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द रीजन तो एटा राइट आंसर हेइ परिबो की को मते राइट आंसर कोन होची ना एटा त आपनकर हबनी द ब्रिटिश आपण मान को कहूची नंबर 3 को कंसीडर करो बिकॉज़ आपण माने जानि चंती आपनकर कोन रियोत्वारी वाज इन द साउथ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन ओडिशा हैड ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एग्रीरियन इकोनॉमी इन द सोसाइटी एटा आपनकर सब बेले कोन पॉजिटिव अछि की तो ये भी तो रॉन्ग हे गला तो राइट आंसर आपनकर ओनली वन अछि ओनली वन तो ऑप्शन आपनकर नाही तो नन ऑफ द अबव सहित जाई परिबा डी सहित जाई परिबा 1 एंड 3 केमिति 3 टा आपनकर केमिति हबो एठी देइची द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन ओडिशा हैड ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एग्रीरियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द रीजन कोन खाली पॉजिटिव इंपैक्ट देई दिला लोक मान को किसी प्रेशराइज करि नथिला हन नै म देखो तीनटा ठीक अछि तीनटा केमति ठीक हैला रे छुआ तीनटा केमति ठीक हैला राइट आंसर आपन डी पा देखो ना स्टेटमेंट 1 ही ओनली करेक्ट अछि 2 टा इनकरेक्ट 3 भी इनकरेक्ट ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जनरली हैड ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एग्रीरियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी एठी आपन को कोन देछि द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ओडिशा हैज ए पॉजिटिव इंपैक्ट इट जदी नेगेटिव देई थांदा ताहाले सना मार थांदा क्वेश्चन को टिके पढु ना पढा टिके हैला नेक्स्ट मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओडिशा विषय टिके कहि दियो कोटा आपनकर स्टेटमेंट राइट अछि कोटा राइट अछि एंड व्हाट एल्स वी हैव टू एलिमिनेट ओके तो फर्स्ट कोन कहिछि ना कहिछि ओडिशा वाज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1803 तो 1803 रे आपनकर ऑक्युपाई हेइथिला राइट और रॉन्ग तो ये आपनकर राइट हे गला ओडिशा केम अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1858 तो 1858 रे टेक्निकली हमें ताकू करेक्ट करि परिबा कि जेतेबेले आपनकर क्राउन रूल स्टार्ट हैला जेतेबेले आपनकर क्राउन रूल स्टार्ट हैला 1858 रे ताहाले हमें आकू रिलेट करि परिबा कि देखिबा एटा को टिके फाक कर देथिबा देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आफ्टर द 1937 इलेक्शन तो 1937 नहीं तो आपनकर कोन ना इलेक्शन हेइथिला फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमें कहूचे हना नै म देखो सो 3 टा आपनकर राइट हैला 1 एंड 3 कोठी ऑप्शन अछि अगेन 1 एंड 3 ऑप्शन नै अच्छा 1 एंड 3 आपनकर ऑप्शन सी राइट 1 एंड 3 आपनकर ऑप्शन सी रे इठी मेंशन करा जायछि 2 टा आपनकर हबो नाही कारण 1858 सहित हमें डायरेक्ट ब्रिटिश रूल एमिति किछि मेंशन करबानी गोटे थरा ब्रिटिश रूल असला 1803 हमें एटा को मन रखिछे हैला संबलपुर गोलाल को 1804 हे जायतिला एति कि जिंस हां हां सी और कौन होचो तम माने एमती कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओडिशा ओके ओडिशा विषय टिके स्टेटमेंट को कंसीडर कर फर्स्ट कहिछि द ओडिशा ट्रिब्यूटरी स्टेट्स वेयर प्लेस्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड ओडिशा इन 1912 इज दैट ट्रू तो हमें कहि परिबा कि 1912 रे क्वेश्चन कोन देछि व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज अच्छा इनकरेक्ट देछि तो एटा त आपनकर ट्रू हे गला नेक्स्ट देछि द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा वाज डिटैक्टेड फ्रॉम बंगाल इन 1912 दैट्स आल्सो ट्रू ताहाले एठी कोन पुनी नन ऑफ द अबव सहित जाई परिबा हमें यस और नो बोथ केमिति हबो गधस्थल बोथ ऑप्शन नाही ना दीटा जाका आपनकर इनकरेक्ट पचास तो नन ऑफ दीज ऑप्शन अछि हैला ऑप्शन कोन अछि नन ऑफ दीज अछि बिकॉज़ वी नो 1912 रे आपनकर कोन ना ओडिशा एंड बिहार बंगाल टू सेपरेशन हे जाइथिले राइट और रॉन्ग तो या सहित रिलेट करैबो ही नाही नेक्स्ट सो दे आपनकर दीटा जाका कोन करेक्ट हे गला आपनको इनकरेक्ट पचाछि त हमें ताको सेपरेट करि देबा नेक्स्ट मते को हां एंड एटा मन रखो ऑन 1st ऑफ अप्रैल 1912 रे आपनकर सेपरेशन हेथिला ओडिशा एंड बिहार मिसे की बंगाल टू दिस प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा वाज ऑफिशियली डिटैच्ड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी टू फॉर्म ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जेतरे भी आपनकर कैपिटल कोन थिला ना पटना थिला कैपिटल एंड दिस डिवीजन वाज प्रीवियसली अनाउंस्ड बाय किंग जॉर्ज 5 during the Delhi Darbar in December 1911 it announced kara jaitila but officially on pen and paper it was held in 1912 1st of April is that clear next question chala mate ko consider the following statements about Ryotwari system already mu taman ko badhiya ki Ryotwari system kona puchai deli ebe mate kahi dela statements apankara right or wrong kona pachaichi
ना राइट पचार अच्छा पढ़ी दियो टिके राइट कोटा हम मते कहि दियो फास्ट कहछि द Ryotwari system was a system of land revenue settlement in which the individual peasants of Ryot was the owner of the land एठी देखो जते बेले कहछि Ryot means कोन peasant means farmer that means जते बेले Ryotwari कथा आसुछि हमक पाइन को सिजर का farmer तो गोटे farmer कहले हम कहछि गोटे individual farmer तार कोन केति की परिश्रम रे से केति की लैंड रेवेन्यू दोछि सो Ryotwari आपनकर इंडिविजुअल सहित आपन मानकर गला नेक्स्ट कहछि द Ryotwari system was introduced by Thomas Munro in 1820 ताहाले एटा राइट और रॉन्ग मते किए कहि परिबो राइट और रॉन्ग किए मते कहि परिबो क्विक जल्दी मते को Ryotwari system आपनकर की इंट्रोड्यूस करिथिले Ryotwari system आपनकर की इंट्रोड्यूस करथिले मुन्रो ही इंट्रोड्यूस करिथिले एंड आपनकर 1820 रे ही इंट्रोड्यूस करथिले सो इटा आपनकर कोन 1 and 2 बोथ हे जिवा राइट आंसर ऑप्शन सी हां नहीं बोथ सेंटेंस आपनकर राइट हे गला द सिस्टम वाज फेमसली इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड while it was drilled in the late 18th century it was officially established across the Madras presidency in 1820 during the Munro's tenure to government right next question कौन देछि मते को in which year did Joy Rajgur led the revolt against the British with the army of Paika warriors जहां को हमें कोन कहू जे फास्ट आपनकर ब्रिटिश मान को अगेंस्ट गोटे युद्ध हेतिला माने गोटे नॉट लाइक ए युद्ध बस तांको अगेंस्ट गोटे रिवोल्ट थिला that was the initial गोटे पोप मिलला 1817 that was the first initiate but still हमें 1804 को रिलेट करेबा केते जन मो सहित एकमत ऑप्शन ए सहित केते जन जाउछो 1804 रे Joy Rajgur led an early revolt of the Paika Rebellion against the British that was after they कोन ना आपनकर एंगेज हेले जो माने आपनकर Paika Rebellion ने बक्सी जगबंधु तेबे आपनकर Paika Rebellion आसिला तार इनिशियल जो फाउंडिंग स्टोन हमें कहउने कि सेटा आपनकर Joy Rajgur ऑलरेडी 1804 रे रखि सारी थी आफ्टर दैट 1817 ने आपनकर यार सेकंड पार्ट हमें कहि परिबा 1817 रिवोल्ट ओके नेक्स्ट चला 186 रे ताकर कोन फांसी दिया जाइथिला 186 रे Joy Rajgur को आपनकर कोन ना एग्जीक्यूट करि देइथिले ओके एटा आपनकर Paika Rebellion ऑलरेडी समस्त जानिछो राइट नेक्स्ट चलो राइट आंसर when did the Paika Rebellion take place in Odisha against the British rule जते बेले आपण मानको Paika Rebellion कहूची सेते बेले माइंड कसिबो one and only बक्सी जगबंधु and this was a Paika Rebellion और खोर्धा uprising बोली हमें ताको कहूची केबे ना 1817 मसिया रे आपनकर ऑफिशियली that was erupted in March 1817 as an armed uprising हैला चलो 1825 कहले इथे आपण माने वीर सुरेंद्र साई को रिलेट करी पारि काहेकि कारण this is the year so Surendra Sai और बक्सी जगबंधु हम दिना को रिलेट करि परिबे जो माने ब्रिटिश सहित फाइट करूथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिगला मते को when did the Paika Rebellion begin in खोर्धा एबे कहिदिले आपण मानकू Paika Rebellion आपनकर खोर्धा रे आरंभ केबे हेतिला के मते कहि परिबो फाइनल सरेंडर 1825 रे डेफिनेटली शुभलक्ष्मी मते को केबे स्टार्ट हेतिला 1817 आपनकर राइट आंसर कंफ्यूज हेबा बळे नाही आपनकर जेतु 29 मार्च 1817 मसिया को हम जानछे ऑफिशियली इट वाज अ बिगन ऑन द डेट व्हेन ए लार्ज ट्रूप ऑफ द ट्राइबल आपनकर जो ट्राइब माने आपनकर हेल्प करथले दे वर द कंध ट्राइब ओके कंध दे एंटर टू द खोर्धा एंड वेयर joined with the Bakshi Jagabandhu and make the rebellion so large and so huge okay next question देखिबा कोन कहूची 2 अक्टोबर गांधी जयंती मने अछि आपण मानकर बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी यदि 15th of August कहूची इंडिया's इंडिपेंडेंस डे दैट आल्सो यू नो थर्ड मेन एमति किछि नाही फर्स्ट में कहितले आपण माने लेबर डे को रिलेट करि थांते ठीक अछि नेक्स्ट चलो मते को what was the other name of the Paika Rebellion in Odisha Odisha रे Paika Rebellion कहिले तम माने कहा को रिलेट करि परिबो कहा को रिलेट करि परिबो जेहेतु एटा आपनकर खोर्धा रो स्टार्ट हेतिला ताको हमें खोर्धा रेबिलियन बोली कहूचे देखो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपण माने बिल्कुल कहिबेनी दो हमें जानि जे ओडिशा गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड दिस टाइटल कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमर Paika Rebellion को दिया जाऊ बट एटा आपनकर इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ताको डिनाई करि कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाला रिवोल्ट को दे दीछि बट ए जो हमर अछि Paika Rebellion खोर्धा रेबिलियन एक्वा में कोन टाइटल दिया जाय छै माने सेंट्रल गवर्नमेंट कोन अप्रूव करिछि दैट इट इज द फर्स्ट war or first revolt okay revolt will more appropriate here na ki first revolt against British
This is the title it has got. Okay, एतिकी जिनसा मन रखि परिबा पक्का. Okay, next question चलो मते कुआ. What was the major cause of the rebellion in Khorda in 1817? Actually रे तबले 1817 ने आपण करो फास्ट 1804 रे आपण कर हेइतिला तापर 1806 रे एग्जीक्यूट हे जाइतिले जयराजगुर. end of the story, right? पुणी थर जदि आपण कर 1817 ने पाइका रेबिलियन पुणी थरे कोन उठिला देन मते कुआ काहे कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ हियर. फास्ट कहिछि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नथिला, अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज बिल्कुल नाही, खुर्दा सहित ट्रेड ए सब तो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट सहित, राइट. देन कहिछि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. यस, दैट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट हियर वी कैन गॉट, राइट. कोन कहिछि ना द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, दैट मींस the core cause kono na the core cause was that the abolition of rent free land tenure. जोटा को हमें कौन कहूचे ना जागीर्स बोली कहूचे. एको हमें कौन कहूचे ना जागीर्स बोली कहूचे. जोटा कि आपनकर मुकुंद राजा मुकुंद देव थिले जेतेबेले आपनकर कोन खोर्धा राजा सेतेबेले सेटा को लोक माननकु जो प्रजा माननकु फ्री लैंड कर देथिले कि तुम माने चाष करो ता बदले हमकु कोन गार्डसी प्रोवाइड करिवो एंड ता बदले आपण माने लैंड फ्री माने टैक्स फ्री लैंड यूज करि पारिबे. दैट वाज द मेन कोर कॉज हैला. नेक्स्ट देखो मते को व्हिच ट्राइबल ग्रुप जॉइंड द पाइका रेबिलियन इन 1817. एबे कुह एबे कहिली त मानकु को ट्राइबल ग्रुप आपण माने करो जल्दी. हां जल्दी मते आंसर दियो. जल्दी मते को ट्राइबल ग्रुप इन 1817 रेबिलियन ताको आपनकर सपोर्ट के करथला. एबे ही त मानु कहितिली वेरी गुड ऑप्शन डी कोंध माने आसी कि बक्सी जगबंधु कर साथ देइथिले. साउरा कहिला आपण माने साउथ ओडिसा सहित रिलेट करि परिबे. लैटर आपण माने कहि परिबे 1817 सहित नुह जदियो हमें प्राइमरी ग्रुप आपण माने रिलेट करि परिबे अंको का सहित ना साउथ सहित माने साउथ ओडिसा सहित एंड ये पीबीटीजीएस ग्रुप रो गोटे पार्ट. तो 13 पीबीटीजीएस अछि साउरा वन ऑफ देम. देन भुया आपण माने कहिले भुया अपराइजिंग केउझरे हितिला. एटा केबे हितिला मते की कहि परिबो भुया अपराइजिंग रे ईयर मते की कहि परिबो 1891 रे भुया अपराइजिंग हितिला केउझर सहित ताको आपण माने रिलेट करि परिबे. जदि मुंडा कहूची एटा आपनकर कोठी हितिला गोटे उल्लू गांव थिला कोन उलकुलन और उलगांव एमती कोन ओटे थिला. दैट वाज एसोसिएटेड विथ दैट हमें बिरसा मुंडा सहित हम रिलेट करि परिबे मुंडा रेबिलियन है. नेक्स्ट चलो मते कुह अगेन हु इज नोन एज द फर्स्ट मार्टर ऑफ ओडिसा's early freedom struggle against British rule. जेतेबेले अर्लीस्ट कहिछि जेतेबेले सबटु स्मॉलेस्ट कहिबो आपण माने कोन ना बाजी राउंड को मारी परिबे सबटु स्मॉलेस्ट मार्टर बोली, राइट, स्मॉलेस्ट वन. बट जदि आपण माने को इठी पचारुछि फर्स्ट शहीद बोली हमें काउंट करूछे कांको ना बक्सी जगबंधु मानतेले कि ना जय राजगुरु को हमें करूछे, राइट. So the first martyr of Odisha execute हेइथिले 1806 रे leading to the 1804 खोर्धा revolt. after that आपण करे कोन ना फांसी पाइथिले, राइट. नेक्स्ट चला मते कुआ how did the British authorities respond to the Khordha rebellion led by Jai Rajgur. कोन हो राइट आंसर. राइट आंसर इटी कोन हो ब्रिटिश रिस्पांस टू जय राजगुर कोन होतिला मते को फास्ट कहिछि दे offered negotiations and concessions. They called for a peaceful protest or they suppressed the rebellion with the help of some natives. कोन थिला राइट आंसर मते की कहि परिबो जय राजगुरु का पीरियड रे कारण 1804 रे रिवोल्ट स्टार्ट हला 1806 रे तांको कोन फांसी दिया गला. दैट मींस एटी किछि गोटे केही तो गोटे गृह शत्रु विभीषण थिबो. सो राइट आंसर हियर व्हाट ना they suppressed the rebellion with the help of some native. That will be the right answer. Clear? See, ha I can see. Next mate kuha which other major uprising followed the Paika rebellion against the rule of the East India Company. kon hoba right answer. Major uprising after Paika rebellion, what was that? Paika rebellion pore jodi 1817 or 1825 सहित हमें रिलेट करूछे ये आपनकर एंड ही जाइथिला ता परे आपनकर कोन मैसूर सहित हमें याकू रिलेट करैबानी ओडिसा को सतारा करैबानी अहोम रेबिलियन करैबानी बट संबलपुर अपराइजिंग को करि परिबा कोन नै मते को संबलपुर अपराइजिंग आपनकर द भेरी माने हमें कहि परिबा दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग रेजिस्टेंस बिगन ओवर द सक्सेशन आफ्टर द डिस्प्यूट्स ऑफ 1827 आपनकर एटा 1827 पर्यंत जाइथिला 27
तापरे आपनकर 1857 वाला म्यूटिनी एटा आपनकर कोन सॉरी एटा 1825 रे आपनकर सरी जाइतिला 1827 रु ये स्टार्ट हे कि 1857 म्यूटिनी पर्यंत पाइक सिपाही विद्रोह सहित लॉन्ग लास्टिंग करिथिला राइट हां बाय वीर सुरेंद्र साय ऑब्वियसली हैला नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुआ Surendra Sai revolted against the Britishers in 1833 from which region of Odisha? को region Odisha रा को region guys quick Odisha रा को region संबलपुर रा बाघ कहां को कहसाय the roar of संबलपुर के थिले आपनकर वीर सुरेंद्र साय and he was from संबलपुर कोना कटक सहित रिलेट करै परिबा हमें कहा सहित बक्सी जगबंधु को भी रिलेट करै परिबा जेहेतु खोर्धा थिले बट सेते बेले कोन सेपरेशन हेतिला कि सब तो मिसी मासी की थिला ना तो खोर्धा सहित हमें रिलेट करै परिबा हैला केउझर सहित आपण माने कहिथिली धरणीधर नायक तांको भी आपण माने रिलेट करि परिबे भुआ भुइया जुआंग ग्रुप रो लोक मानन को हैला नेक्स्ट चलो संबलपुर सहित रिलेट करैबे आपण माने दैट वाज द एपिसेंटर ऑफ द वीर सुरेंद्र साय रिवोल्ट 1827 रो 1833 देन 1862 रे तांगर डेथ हेतिला नाकी सो नेक्स्ट आपण माने मते कोंदु अगेन कहूची महात्याग प्राइस होची आपण मानकर ओनली 4000 वैलिडिटी 2 इयर्स एठी जदी आपण माने एसपीजी 10 कोड यूज करूछंती एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाई परिबे एंड हियर आपण मानकु ऑल वन एग्जामिनेशन 2 इयर्स रो वैलिडिटी सहित आपण माने हम सहित प्रिपरेशन करिबे नेक्स्ट क्वेश्चन मते को हु प्रपोज द रिकॉग्निशन ऑफ द पाइका रेबिलियन एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कोन हबो राइट आंसर क्विक मते को रिकॉग्निशन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कोन हबो केबे मिली थिला देखो इंडिया रे याकू मिली नथिला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यदि पचारिबो ओडिसा गवर्नमेंट याकू रिकॉग्निशन देइथिला काकू 1817 रिवोल्ट कथा कहूची ईस्ट इंडिया कंपनी नै ब्रिटिश पार्लियामेंट देइ नथिला ओडिसा गवर्नमेंट एटा केबे पुनी हितला जानिछो 2017 रे आपनकर एटा मिली थिला इन 2017 द ओडिसा कैबिनेट पास करिथिला ए रिजोल्यूशन formally request करी कि काहाकू ना यूनियन गवर्नमेंट को to grant the status of first war of independence सेते बेले सेटा डिनाई करी दिया जायतिला एते कि जिंस मन रखियो क्लियर चल नेक्स्ट राइट आंसर हे गला सी सो फॉर्मल प्रपोजल टू द रिकॉग्निशन ऑफ पाइका रेबिलियन ऑफ 1817 देखो जुलाई 18 2017 रे प्रपोज करा जायतिला हैला नेक्स्ट चलो मते कुहा द पाइका रेबिलियन ऑफ 1817 occurred in response The Paika Rebellion of 1817 occurred in response to a combination of economic, administrative and social factors. Which of the following British policies specifically targeted local production and self-sufficiency? कौन होगा right answer? Quick. The policy targeting self-sufficiency. कौन होगा? That is ban on salt making from sea water. That was the important point. सब डी मैचम जानछि रिप्लेसमेंट ऑफ विलेज पंचायत एंड ब्रिटिश कोड केते हेतिला एटा राइट आंसर आपन कोन हे गला ऑप्शन बी सॉल्ट मोनोपोली पई एटा आगुरु मु तमाने को 50 थरा हमें 50 थराटा को रिवीजन करी छे सॉल्ट मोनोपोली आपन स्टार्टिंग रे थिला दैट वाज द मेन ट्रिगरिंग पॉइंट थिला पॉलिसी टारगेटिंग करिथिला सेल्फ सफिशिएंसी देखो कौन कहछि द पाइका रेबिलियन ऑफ 1817 occurred in response to a combination of economic, administrative and social factors जेते बेले इकोनॉमिक सहित रिलेट करूची ताहाले आपण माने कोन एठी आपनकर आसी गला कोन सॉल्ट मेकिंग सी वाटर आपनकर सॉल्ट मारुथिले माने लूण मारुथिले तापरे बिकुथिले सेटा तांकर उडे जीविका निबाहर उपाय थिला ना तो से सब का प्रमाण रिलेट करेबे तो सॉल्ट मोनोपोली बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड people in coastal Odisha had the traditional right to manufacturing salt from the sea water from their own consumption and local trade by so trade कथा आसिला माने इकोनॉमी कथा आसिला राइट द ब्रिटिश पॉलिसी आपनकर एटारे मोनोपोली देखैथिले नेक्स्ट मते को व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द पाइका रेबिलियन रो मेन कॉज कोन थिला एठी क्विक बुझी हलानी एट द रेट आसा आउथरे बुझाई दोची पचारी छि द पाइका रेबिलियन ऑफ 1817 occurred in response to a combination of economic okay administrative and social factors which of the following British policies specifically targeted local production and self sufficiency एठी पचाछि कोन local production and self sufficiency ऊपर को टारगेट करछि कोन local production चलिथिबो ता माने coastal districts माने लुण मारथुबे से माने तो एटा थिला तांकर ban on salt making from sea water एटा टारगेट से माने को करिथिले हैला ए जिंसटा तांको टारगेट करिथिला माने जो कोन दिनी कि गोटे आपण मान देखिथिबे
जो माने गो डायलॉग थाए जो माने निजे काचर घर करंती से अन्यर घर को पत्थर मारंतीनी तो जस्ट लाइक दैट तो एमाने कोन करचंदी ना टिके ट्रिगर करि दैचंदी एंड एमान को मना कर दैचंदी लुण फळ मारी परिबोनी तापर से माने पूरा उठी जाइचंदी जिंस आपन को एतिकी थिला बुझी हला @ हाँ लोकल एक्टिविटी थिला मते को व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द पाइका रेबिलियन मेन कॉज कोन अछि देखि दियो हेवी टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश टैक्स इम्पोज्ड हेइथिला आपनकर कन्फिस्केशन ऑफ रेंट फ्री लैंड्स ऑफ द पाइकस डेफिनेटली दीटा ऑप्शन ट्रू ही गला माने ऑल ऑफ द एबव एठी ऑल ऑफ द एबव मारिछ हैला नेक्स्ट क्वेश्चन टिके देखो who was the leader of the Paika Rebellion in 1817 दरकार अछि कि बक्सी जगबंधु थिले आपनकर कोन ना लीडर ऑफ द पाइका रेबिलियन अच्छा मते ताले कहि देलो ए जो राजा मुकुंद देव थिले ये आपनकर किए थिले जेते बेले बक्सी जगबंधु थिले सेनापति ये थिले आपनकर कोन ना किंग ऑफ खोरधा ओके आउ धरणीधर नायक वीर सुरेंद्र साय को आपण माने कहा सहित ना संबलपुर अपराइजिंग सहित रिलेट करेले राइट आउ ये जो धरणीधर नायक यांको आपण माने कहा सहित रिलेट करि परिबे क्विक धरणीधर नायक भुइया अपराइजिंग कहिथिली 1891 केउंझर रे केबे हेतिला ना केउंझर रे हेतिला भुइया अपराइजिंग कि 1891 रे गाइस ये हेतिला है नेक्स्ट वाला मत राइट आंसर दियो व्हाट वाज द मेन एक्शन टेकन बाय द पाइकस ऑफ खोरधा ड्यूरिंग द रेबिलियन मु तमन कोडे वीडियो देखैबी आज बोली भाबी छु तमन कोडे वीडियो देखैबी देखिबा मु तो देखि कि मत माने 2-3 मिनिट जाए माने छाती भीतर ओटे पवन अटके लाळे लागिला अरे यार लोक एते परिश्रम करूचंदी आ आमे एठी कोन करूचे अच्छा खासा पैकेज रे एसी रूम रे बसी क्लास करछे लोक माने टंकाटे पई केते परिश्रम आसा मते को व्हाट वाज द मेन एक्शन टेकन बाय द पाइकस ऑफ खोरधा ड्यूरिंग द रेबिलियन व्हाट वाज द मेन फर्स्ट कहछि द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज ए सरेंडर कोन ब्रिटिश माने करिथिले कि अच्छा दे सरेंडर टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज इज दैट ट्रू or they initiated negotiations for peace or they burnt and sacked government buildings and treasuries they formed a separate government कहछि what was the main action taken by the Paikas of Khordha during the rebellion गोटे पिक को जाई कि से माने कोन हरकत करिथिले ब्रिटिशर्स मानु को कोन डिस्टर्ब करिबा लागि कोन करथिले ना yes that was they burnt and sacked the government buildings and आपनकर कोन ना 15,000 रुपीस सेते बेले बहुत बड़ा अमाउंट आपनकर कोन चोरी भी करथिले ओके तो जोटा म आपन को कहू जे वीडियोटा दिस इज फॉर आपण माने देखि कि टिके फील करंतु गोटे लोको से कांदी पकोची एंड गोटे केते बड़ा रेफ्रिजरेटर भाब दीटा फ्लोर वाला माने सेटा को टेकी कि नोची एंड लिटरली से चाली भी पारुनी see once more तो चली भी पारोने डेफिनेटली खराब भी होथो गाइस जस्ट क्लास स्टार्ट पूर्वरोटा को देखिली माइंड टा पूरा खराब हो गला बुझिलो केते कष्ट लोक करूछंदी दुनिया रे आ तमन को पाखे जो अपॉर्चुनिटी अछि बहुत स्लम एरिया रे पिला रुहंती से माने चाहंती पढिया पई बट they don't have any options to move forward to study more and more but you guys have now ताकू मिस यूटिलाइज करनी अरे प्रॉपर यूटिलाइज करो पाठ पढ़ टिके कंसंट्रेट करो गाइस आज तो मन पाखे टाइम अछि काली निहाती नथिबो आ सेते बेले त माने भाबुथबो अरे एते इजी पाठ जते बेले त माने बड़ हबो एमिति के जॉब कर नथबो के बिजनेस करथबो या फिर के ऑटो चलाउथबो के पान दुकान देइथबो जियो मानकर कोन अछि से माने हाउस वाइफ हेसिबे राइट तो तुम छुआ पाठ पढ़ुवे ना तुम देखिए कह अरे एत इजी पाठ थिला सेते बेले टिके परिश्रम बस तुम जो 70% अच्छे ना से आ जो 30टा दरकार से तुम करूना और बस टिके परिश्रम दरकार थिला कर देथिले आज आमे कोठना कोठोटे था एटलीस्ट आमर नेक्स्ट दीटा जनरेशन को आमे गोटे वेल एस्टाब्लिश लाइफस्टाइल दे पारि था सेते बेले तुम भाबिबो कि अरे मैम आम पछरे चिल्लौथिले सार माने हमको कहूथिले बट आमे हेलु गोटे गध एंड गथीस आमे मैडम को कथा सुनु नथिले द डे डेफिनेटली विल कम इन योर लाइफ एंड
that day you will repent for what you are doing now in your chat box. Okay, asa first koi dio 26 which reform was introduced by the British authorities following the surrender of Bakshi Jagabandhu in 1825. जेतेबेले 1825 कथा कहूची that means surrender कथा पळे आसी राइट ता माने कोन एठी हेथिला एठी आपन को सरेंडर कथा पचारछि माने पोस्ट रेविलियन रिफॉर्म्स कथा पचारुछि 1825 means so which reforms was introduced by the British authorities following the surrender of Bakshi Jagabandhu जे सरेंडर करि देले ता परे कोन हेतिला ना जो सॉल्ट प्राइस आपनकर कोन हाई करिक रखिथिले सेटारे रिडक्शन हेतिला तो रिडक्शन इन सॉल्ट प्राइसेस थिला क्लियर वेरी गुड Next, so right answer, after the suppression of the Paika Rebellion and the eventual surrender of the Bakshi Jagabandhu in 1825, the British authorities realized that their extreme economic exploitation had triggered the massive uprisings. To prevent future revolts and pacify the local population, they introduced several administrative and economic reforms. But after the surrender of Bakshi Jagabandhu, they just reduced the salt prices. Okay, next one. What was the outcome of the Paika Rebellion? Paika Rebellion आपनकर हेला and end result रे कोन आसिला? What was the outcome of the rebellion? Quick. कोन हबो? What was the outcome of the rebellion? That was the Paikas were defeated and the rebellion was crossed by the British. Has कहि the Paikas were victorious हेइ नथिले. There was no clear victory and the stalemate ended na. The Paikas and the British reached the compromise हेइ नथिला. Paika माने कोन ना कि जेकी surrender करथिले. Right? So option B हेगला. Despite the initial success of the rebels in capturing Khordha and Banapur, the British responded with overwhelming military force. So definitely 1817 ने start हेकि आपनकर end हेतला 1824 सहित. Next मते को which of the following is not a cause of the Paika Rebellion? Paika Rebellion ना कोटा कोटे cause नुह. म आपण मानु कहि छि ब्रिटिश ऑपरेशन थिला, इकोनॉमिक हार्डशिप थिला, सोशल इनजस्टिस भी थिला, सब तो थिला. अच्छा रिलीजियस इंटॉलरेंस एटा आपनकर नथिला. रिलीजियन कथा सेतिगले किछि उठी नथिला. ओके तो रिलीजियन कथा ही आपनकर उठी नथिला. आउ बाकी सब जिंस आपनकर कोन सैटिस्फाई करछि क्वेश्चन डिमांड. So the Paika Rebellion in 1817 that was unify all the options. Next mate कहि दियो after the suppression of the Paika Rebellion what was the fate of Bakshi Jagabandhu? जेते बेले आपनकर suppression हेइथिला Bakshi Jagabandhu को सहित कोन हेइथिला पछछि fate of Bakshi Jagabandhu मते को executed publicly in Cuttack, imprisoned and deported to cellular jail, surrendered and died in captivity or escaped to Nepal and continued ए सब नै आपनकर कोन हेतिला ना surrender हेतिले and तांकर कोन ना जेल रे ही कोन हेतिला ना तांकर मृत्यु हेतिला राइट एक्जिक्यूटेड आपनकर जय राजगुरु को एक्जिक्यूट करा जायतिला पूरा समस्त आगे फांसी दिया जायतिला बक्सी जगबंधु वाज नेवर एक्जिक्यूट ओके सेल्युलर जेल जति हमें कहि परिबा लाइक कला पानी को कह जाय आपनकर सेल्युलर जेल कला पानी को भी तांको पठा जाय नथिला सरेंडर हेतिले बक्सी जगबंधु जेतु सरेंडर करथिले 1825 मसिया रे 1825 रे हेतिला आपनकर सरेंडर एंड हमें कहि परिबा अंडर द टर्म्स दैट अलाउड हिम टू लाइव इन द कटक चौद्वार जेल से थिले बंदी हेकि थिले एंड सेठी आपनकर 1829 रे तांकर कोन डेथ हेतिला 1829 रे बट ही नेवर एक्जीक्यूटेड ओके नेक्स्ट मते को यार आंसर को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके कोन पचारि छी ना व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अच्छा करेक्ट अकॉर्डिंग जीवा फर्स्ट कोन कहि छी म देखि दियो ना पाइका रेबिलियन आल्सो कॉल्ड द पाइका रेबिलियन ओके खोदा रेबिलियन लिखियो कथा पाइका रेबिलियन डबल कर दे छी इग्नोर इट ओके वाज एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन ओडिशा डेफिनेटली इट्स ट्रू वन then कहि the Paikas rose in rebellion under their leader of Bakshi Jagabandhu true one Paikas owned a rent free land that had been given to them for their military service to the kingdom of course definitely so both आपनकर कोन 1 2 and 3 हला राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मते को कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट जय राजगुरु को विषय रे टिके स्टेटमेंट पढि चला कोन होबा राइट और रॉन्ग कोन पछै छी टिके देखि दियो पछै छी कोन व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज अच्छा इनकरेक्ट पछै देछि छुआ तो एटा टिके केयरफुली आंसर दबो हैला फर्स्ट कहि छी जय राजगुरु रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज़ ऑफ देयर ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन दैट्स ट्रू आपनकर कोन जे हेतु रिवोल्ट करिथिले तो सेति पय ताको जेल दिया जायथिला राइट
Then Joy Rajguru was a freedom fighter from Odisha who led the rebellion against the British East India Company in 1806. He was captured and hanged by the British on 6th December 1806. Actually आपनकर 1804 रे हेतिला, but जेहेतु इवेंट आपनकर मिक्स करिक लेखिची 6th December 1806 रे हेची, तो दो आमे कहि परिबा none of the above or option 2 only. देखिए कौन ऑप्शन 2 ओनली डेफिनेटली कहीं कारण एटा आपनकर जो 1806 टा मेंशन कर देछि एटा आपनकर एक्चुअली रे कोन ना 1804 हबो 1804 रे स्टार्ट हे कि 1806 रे आपनकर कोन एंड हेतिला जदि 1806 रे स्टार्ट हे कि 1806 रे एंड हेतिला एटा आपनकर रॉन्ग स्टेटमेंट हेजिबो कारण 2 इयर्स रे गैप थिला ओके चल नेक्स्ट वा देखो कहि जी मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 सहित लिस्ट 2 को टिके मैच कर दबो इज दैट क्लियर आसो मते कुह कोन कोन कहिछि ना बक्सी जगबंधु चक्रा बिसोई आपनकर चैतन्य माछी या फिर आपनकर दल बेहेरा आपनकर कोन अछि मिहिरदर अली ओके तो यांको हम राइट आंसर कोटा चूज करिबा तो फास्ट कहि दो बक्सी जगबंधु खोडा ठीक ही अछंती ठीक चक्रा बिसोई को हम कहा सहित रिलेट करेबा चक्रा विषय को आमे घुमुसर सहित रिलेट करि पारिबा 1 3 कोटे ऑप्शन अछि मते कुह ए गोटिए रे 1 3 4 2 अछि बाकी सब को रिलेट करि दियो 1 3 4 2 सहित रिलेट करि दियो आपण माने क्लियर चलो नेक्स्ट तो ऑप्शन ए होला राइट आंसर ही वाज द मिलिटरी रेस्ट आपण माने चेक करि पारिबे मते को व्हिच एस्पेक्ट ऑफ ओडिशा सोसाइटी वाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857 जेतेबेले 1857 रिवोल्ट कहउछ दैट मींस द सिपाही म्यूटिनी और हमें कहतो अछि सिपाही विद्रोह राइट तो पछाछि कोन ना कास्ट सिस्टम सहित यार किछि लेना देना थिला कि कास्ट सिस्टम सहित किछि अछि बहुत सारा सोशल रिफॉर्म्स आपनकर एग्जीक्यूट हेइतिला ओवर द कास्ट सिस्टम बट दो in that period आपनकर कास्ट सिस्टम सहित किछि रिलेशन नथिला ओके देन को वुमेन्स राइट पाई बिल्कुल नथिला रिलीजियस प्रैक्टिस नथिला बट लैंड टेन्योर सिस्टम ऑब्वियसली आपनकर एटा थाई पारे काहे कि थिला ही बिकॉज़ द रिवोल्ट लेड बाय द ब्रिटिश सॉरी the revolt led the British to reconsider the tax revenue system जोटा revenue policy से लोको मानक ऊपर और the people of Odisha the peasants of Odisha ऊपर implement करथले to rethink and repress that है ना नेक्स्ट कौन कहि छ देखो तो राइट आंसर आपनकर सी हे गला मते को who among the following Odia nationalists actively participated in the revolt of 1857 against the British rule कोड हा राइट आंसर मते कहितला देखि जते बेले 1857 कथा कहूची आपनकर के वीर सुरेंद्र साई ही हेबे वीर सुरेंद्र साई थिले आपनकर जो अर्जुन सिंह कहूची ये आपनकर सिंहभूमि रीजन रो राजा थिले जे कि आपनकर 1857 रिवोल्ट रे जेमिति ओडिसा रो वीर सुरेंद्र साई पार्टिसिपेट करिथिले तो सिंहभूमि रो राजा आमे कहूचे किंग ऑफ पोरहाट समथिंग थिला तो सी आपनकर भी सेम रीजन सिंहभूमि रीजन रो 1857 रिवोल्ट रे पार्टिसिपेट करिथिले वीर सुरेंद्र साई को परि बाकी चंदन हजूरी को वी ऑल नो कोन एज द चाखी खुंटिया कहा सता हम रिलेट करछे ही वाज अ प्रीस्ट ऑफ पुरी एंड ता परे आपनकर कोन ना सिपाही विद्रोह रे भी से पार्टिसिपेट करिसंती बट एठी पचारु 1857 अगेंस्ट रे के मेन पार्टिसिपेट करिसंती से आपनकर वीर सुरेंद्र साई थिले एतिकी दिन समान रह परिबो चलो नेक्स्ट मते कहिबो Which region in Odisha revolted against the British rule under Surendra Sai in 1833? Guys, बढ़िया important question मते को 1833 हमें जानचे सुरेंद्र साई संबलपुर 1857 रिवोल्ट रे भी से पार्टिसिपेट करथले बट 1833 कथा कहूची that also related the संबलपुर कारण पूरी टाकू हमें रिलेट करेबा 1817 रिवोल्ट सहित so here is the right answer संबलपुर again okay next देखो so the rebellion led by the Veer Surendra Sai was centered in the Sambalpur region of Odisha of Western Odisha. Okay. Next, mother कहते who played a significant role in spreading the message of revolution through the literary works during the Sipahi Mutiny of 1857. Guys, 1857 time रे आपनकर जो हमें कोनती नी मेसेज दियंती लेटर लेखंती डिफरेंट प्लेस रे आपनकर कोन लोक मान को गैदर करंती मीटिंग सेटिंग करंती है ना तो कोन केमती प्लान हबो तार प्लान रो टोटल प्लानिंग करंती ताको केमती इंप्लीमेंट करबो ए सब जिंस आपनकर हुए किए लेखंती लिटरेरी वर्क सहित चिट्ठी देकी काहा को डाकंती ना ये थिले आपनकर चंदन हजूरी केथिरे ऑप्शन डी काहे के मारा जाउची ऑप्शन डी काहे के मारा जाउची राइट आंसर चंदन हजूरी थिले आल्सो पॉपुलरली नोन एज चाकी खुंटिया प्लेड यूनिक एंड वाइटल रोल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 जेहेतु जने प्रीस्ट थिले जगन्नाथ टेंपल पुरी रे एंड से कोन ट्रैवल करूथिले डिफरेंट एरिया को पूजा पाठ ना रे एंड लोक मान को मैसेज दोथिले नेक्स्ट मते को व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द चैलेंज प्रपोज्ड बाय सुरेंद्र साई अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1833 कोन थिला आपण माने मते कहंतु
हाँ हाँ समस्ते फॉलो कर से आगु को जाइए जने पॉलिटिशियन लगी मते कह व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द चैलेंज posed by Surendra Sai against the British government in 1833 1833 हेले one and only जते बेले आपन को कहूची सनसेट लॉ तो इंप्लीमेंट नहीं सॉल्ट मोनोपोली तो सेपटे नहीं आपन कर लैंड रेवेन्यू नहीं बट जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रही छि कोन आमे ताकू रिलेट करि पारी बाकी यस और नो because we know the British denied the Surendra Sai claim to throne the Sambalpur after the king died आपन कर जते बेले राजा चली जाइथिले तांकर जो कहते धर्म पुओ है या फिर आपणकर एक्सेप्ट करथिले पुओ भाबरे तो ब्रिटिशर्स माने तांको डिनाय कर देथिले यू आर नॉट द राइट पर्सन और यू आर नॉट द कोन कहते सक्सेसर ऑफ द संबलपुरिज्म तो तांको डिनाय करते दैट वाज द मेन थिंग ऑप्शन सी although the formal doctrine of lapse was officially codified the law Dela House in 1848 but still आपणकर एटा आपणकर कोन बी नाही एटा आपणकर सी सॉरी अच्छा बीटा एपट अच्छे कि अच्छा अच्छा ठीक अच्छे बीटा तले अच्छे मु देखिनी सी भाभी देली नेक्स्ट मते को whose revolt against the sunset law introduced by Lord Cornwallis in August 1857 was supported by the Khandaitas माने एटा को सपोर्ट करिथिले तो मते को रिवोल्ट सपोर्टेड बाय द खंडायत सेरा कोन थिला क्विक कहां को सपोर्ट माने हुज रिवोल्ट कहार रिवोल्ट को सनसेट लॉ अगेंस्ट जेतले रिवोल्ट करथिले तांको सपोर्ट करथिले राजा अर्जुन सिंह तांको सहित हम रिलेट करेबानी मु तांको सिंह भूमि सहित रिलेट करैथिली वीर सुरेंद्र सायंकर सॉल्ट लॉ सहित किछि रिलेशन नाही बट एठी रामकृष्ण सामंत सिंहारंग सहित आपण माने रिलेट करै परिबे समस्त ऑप्शन डी मारिछ रामकृष्ण सामंत सिंहार आपणकर एक्स जमीदार थिले कोठिकार ना बलियार ये थिले बालियार एक्स जमीदार ठीक अछि एंड ए मानको सनसेट लॉ अगेंस्ट एमान को जेहेतु एक्स जमीदार माने कोन जमीदार से थिले जेहेतु सनसेट लॉ फॉलो करि पारलेनी सनसेट पीरियड पूर्वरु आपनकर लैंड रेवेन्यू देई पारलेनी सेति लागि तांको बहिष्कार करके आ जण को से पदवी दिया जायथिला सो ही वाज बिकम द एक्स जमीदार तो सी आपनकर कोन फाइट करिथिले या अगेंस्ट एंड खंडायत माने हमको सपोर्ट करिथिले नेक्स्ट मते को द मेन रीजन फॉर द पीजेंट्स टू जॉइन द 1857 रिवोल्ट वाज तो मेन रीजन आपनकर कोन थिला पेजेंट माने जेतेबेले 1857 रिवोल्ट रे पार्टिसिपेट करिथिले कोन अछि ना inordinately high revenue demands that's true the revenue policies not only uprooted the ordinary peasants but also destroyed the granary of the country that's also true the comment option all of them right 1857 revolt was not just a military mutiny, it was a massive agrarian uprising triggered by the devastating impact of British land revenue policies. Next question mate kahi diyo which of the following leaders was the successor of the great poet Abhimanyu Samanta Sinha? Kon haba right answer? Successor of the poet Abhimanyu Samanta Sinha ke thile apankara तांकर नेक्स्ट जनरेशन आपनकर की थिले जहांकू एक्स जमीदार एबे मु कहिली जहांकू एबे एक्स जमीदार कहिली चाठी खुंटिया वीर सुरेंद्र साय राजा अर्जुन सिंह पटवा ये त नुहंती राहिले आपनकर रामकृष्ण सामंत सिंहार टाइटल देखि मैच कर दबो तमे ने हो ना सो राइट आंसर ऑप्शन डी रामकृष्ण सामंत सिंहार वाज ए नोटेबल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा's resistance against British rule and a direct descendant of the literary legacy of the region and he was the successor of राम आपनकर सॉरी अभिमन्यु सामंत सिंह ठीक अछि एंड आपनकर 1857 रिवोल्ट टाइम रे जते बेले तांको बेदखल करा गला तो खंडायत माने तांको सपोर्ट करथिले ओके सन ऑफ रामकृष्ण केमथि हेले कि सन ऑफ अभिमन्यु हेबे ना तो महापैक अगेन कहूची 4000 वैलिडिटी 2 इयर्स एठी आपण माने जति एसपीजी 10 कोड यूज करूछंती एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी पाइ राइट जदि पीडीएफ पाई चाहउछंती टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि जाओ वेदांत क्लासेस रो टेलीग्राम चैनल एटा फ्री रे आपण माने एठी पीडीएफ पाई परिबे हियर इज माय इंस्टा आईडी आपण माने मते एठी फॉलो भी करि परिबे ओके डन थैंक यू सो मच गाइस होप क्लास आपण माने को भलो लागि थिबो निहाती एंड जेहेतु क्लास टिके चिट चैट नाही हैला ओके thank you so much have a good night take care of yourself but first of all do prioritize your parents this would be your first priority no one else in the world thank you so much jai jagannath and I love you so much bye bye good night